Students, now in this session of video we are going to discuss class 11th maths and trigonometrical function. Clear? Okay, today we will discuss about a theorem. So theorem 1 is that prove that the general solution of sin theta is equal to sin y is given y. So this is the general equation of sin theta. Clear? Yesterday I will discuss about the two type of solution, general solution and a principal solution. So today we are going to find out the general solution of sin theta. Clear? General solution means आप sin theta के वैल्यू को कहीं पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं. Clear? Okay, for solution we have given that sin theta, we can say x, sin x is equal to sin y. Further it can be written as sin x minus sin y is equal to 0. Clear? Okay, so this can be we can apply a formula for that, the identity for that. So identity is 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 is equal to 0. So there are two possibilities. So what the possibility is that either this is 0 and this is 0. It is already 0. So cos x plus y upon 2 is equal to 0, or sin x minus y upon 2 is equal to 0. So if this is 0, so we can write cos x plus y by 2 is equal to cos 0. Cos is 0 always is the even multiple of pi by 2. So we can write 2n plus 1 pi by 2. Clear? Cos 0 कहाँ कहाँ होता है? Cos 0 होता है 90, 270 यानी पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल पे, और साइन x माइनस वाई, साइन 0 होता है आपका 0, 180, 2 पाई, then 3 पाई, then 4 पाई. So we can see n pi पे. Clear? Every n pi the sign is 0. So we can say finally x plus y by 2 is equal to 2n plus 1 pi by 2, or x minus y by 2 is equal to 2n pi. Clear है? Means sorry, it is cos. Comparing both sides theta, it is sin. Cos x plus y by 2 or cos 2n plus 1 pi by 2, sin x minus y by 2 or sin n pi. So cos 0 कब कब होगा? 2n plus 1 even multiple of pi by 2, और ये n pi पे. Clear? So comparing the theta, x plus y by 2 is equal to this. So this pi by 2 to 2 cancel out, and x minus y by 2. So x is equal to 2n plus 1 pi and plus, it is plus minus y, or x is equal to again 2n plus 2n pi, and that is plus y. Clear? So finally we can combine both of them. Combining both we get, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n और y. क्लियर? दोनों को कंबाइन करने पर किस किस को कंबाइन किया हमने? The last result is this: 2n plus 1 pi minus is minus y, or x is equal to 2n pi plus y. Clear? So finally you have a result, that is x is equal to n pi plus minus 1 to the power n. Similarly you can find for the cos. Clear? So directly I am writing down the value of cos. If the cos is written, cos x minus is equal to cos y.
So the general solution for cos, general solution for cos x, for cos theta, x is equal to 2n pi plus minus y, 2n pi plus minus y. This is for cos, general formula for cos. For tan theta, general solution for tan, x is equal to n pi plus y. Clear? So we have three general formula. X is equal to n pi plus minus 1 to the power n y, x is equal to 2n pi plus minus y, or clear? Now we'll take one example to clear our concept about general and principal solution. Clear? We'll take an example. Now we have sin x is equal to minus root 3 upon 2. So first step, sin x is equal to convert this value in terms of the sin theta. Clear? इसको थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए. So sin 30, but it is negative value. So first of all, forget the negative value. Root 3 upon 2. Root 3 upon 2 is a value of sin 60. So we can write it as minus sin pi by 3. Clear? But pi by 3 is lies on, minus pi by 3 is lies on first quadrant all positive, second quadrant sign positive, third quadrant sign negative, and fourth quadrant sign negative. Clear? So it is obviously like in this third quadrant. So we can say sin x is equal to, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3 प्लस पाई प्लस पाई बाई 3. थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा. क्लियर? इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए. साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, so this is 4 pi by 3, 4 pi by 3. So x is equal to, now this is x and this is y. So we know that the formula x is equal to n pi plus minus 1 to the power n 4 pi by 3. This is general solution. Clear? Now we will take one more example. The question is cos x is equal to 1 upon 2. So cos x is equal to cos 1 by 2. 1 by 2 is cos 60. So we can write it as cos pi by 3. So no need to change the sign because it is already positive. So directly we can write as cos x is equal to 2n pi or plus minus pi by 3. This is the general solution for cos. Okay? Clear? Very simple question we have. Now next we will take one more. Okay, in this question there is a problem. The problem is that it is not a direct answer. So first of all we will solve. पहले हम लोग उसको और easily solve कर लेते हैं x और y की values में. देखिए ठीक कैसे लिख सकते हैं. 2 cos square, we know the identity, 1 minus साइन स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर क्या ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0. सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स. नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सॉरी माइनस 2. साइन चेंज किए. साइन ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस माइनस, और ये माइनस था
ये प्लस था माइनस हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 2 जा 4, सो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 4 साइन एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, कॉमन लीजिए, 2 साइन एक्स को बना सकता है, सो व्हाट रिमेनिंग साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, सो साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2 और 2 साइन एक्स प्लस 1 is equal to 0. Okay, now either it is 0 or it is 0. Sin x minus 2 is equal to 0 or 2 sin x plus 1 is equal to 0. So sin x is equal to 2 or sin x is equal to minus 1 upon 2. But this is not possible. Why? Because the value of sin is the most value sin x is 1. Clear? So 1 से greater value नहीं हो सकती. Okay, so this is not possible. Clear? Now the value is sin minus 1 upon 2. Again minus, so sin, we can write sin x is equal to sin negative minus sin pi by 6, or again sin is negative 1/3 quadrant, so sin x is equal to sin pi plus pi by 6, so sin x is equal to sin 7 pi by 6, so x is equal to what? 7 pi by 6. Okay, so I hope you understand that and try to solve all the answers.